today, before starting the new lecture today, ऐसा करते हैं कि पहले हम जाते हैं स्क्रीन शेयर की तरफ एंड लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द अपना क्या नाम है जो आपका किडनी है। किडनी की जो स्ट्रक्चर है वो मैं आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। और इसमें यह है कि ओनली मेरी माई स्क्रीन विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। आप लोगों की तरफ से जो आंसर्स वगैरह हैं या जो मैसेजेस हैं दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड, तो ओनली माई स्क्रीन विल बी रिकॉर्डेड। तो ये चीज़ जो है ना, आप आपकी पार्टिसिपेशन इंशाल्लाह जो है वो रिकॉर्ड होगी, ठीक है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो टू द स्क्रीन शेयर एंड लेट मी शो यू पीपल द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी जो हमने कल पढ़ा था। उसके बाद फिर हम डिटेल फंक्शन ऑफ द जो नेफ्रॉन है वो हमने आज पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ किडनी लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये हमने पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी में यस्टरडे शेप ऑफ द किडनी हमने देखा था। वी स्टडीड अबाउट द पोजीशन ऑफ द किडनी, we studied about the internal general structure of the kidney, the calyces of the kidney, the papilla and these things. This is what we will be observing in this video, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, can you see the screen? ये देखिए ये किडनी का पोजीशन, इसमें आवाज ठीक है। A kidney has two regions, cortex and medulla. The medulla has conical masses called the renal pyramids, having broad base towards the cortex, and the narrow ends called renal papillae towards the pelvis. Each papilla projects into calyx. These open into a wide funnel-shaped structure called the pelvis, which leads into the ureter. In between the pyramids, the cortex extends into the medulla as renal columns of Bertini. A kidney is composed of numerous microscopic coiled tubules called nephrons or uriniferous tubules. The nephrons are much coiled in the outer cortex region of the kidney and run almost straight in the inner medulla region. Okay, this was the general structure of the kidney, ठीक है। And today we are going to see function of the kidney. Functioning of the kidney में how urine is produced in the kidney, ये हम लोग जो हैं ये हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले आप लोगों के साथ बोर्ड शेयर करती हूँ एंड बोर्ड के ऊपर आप लोगों को नोट्स देती हूँ, उसको आप लोग जो हैं अपने पास नोट करते जाइए, ठीक है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी द फंक्शन ऑफ द किडनी which is called the formation of urine, ठीक है। बोर्ड को कॉपी करते जाइए आप लोग। Formation of urine. Generally, when we see the nephron, which is the functional unit of the kidney, this nephron is generally known as the functional unit of the kidney. जब हम कहते हैं कि something is a functional unit, तो इसका क्या मतलब होता है? Do you have any idea? When we say something is a functional unit, तो फिर इसका क्या मतलब होता है? Do you have any idea why we say something is a functional unit? कोई आपको इसमें पता चलता है? What मैसेज में कर दीजिए जी बेटा। Any answers? When we say something is a functional unit, functional unit का मतलब ये होता है, for example, the kidney, the function of the kidney is formation of urine, ठीक है। And formation of urine in the kidney is carried out by many workers in the kidney, which are called the nephrons. The functioning of the kidney is the general function of the kidney, जो कि उसका एक बड़ा फंक्शन बनता है। लेकिन छोटे छोटे जो मेंबर्स हैं जो कि इकट्ठा होके ये थोड़ा थोड़ा काम करके
major काम बनाते हैं, that is known as the formation of urine by the kidney. But who is doing the kidney functioning at the root level? That is the nephron. So nephron is the main unit of the kidney which is working to bring up the main function of the kidney. समझ आ गई? The functional unit, the working unit, the main working unit of the kidney is the nephron. When we study the nephron, we see that the nephron was divided into major parts. Glomerulus, which is placed inside the Bowman's capsule, is placed inside the Bowman's capsule. Then next to this we have the tubular system. कल हमने ये पढ़ लिया था. We have the tubular system, and then after the tubular system we have the duct system. ठीक है? These are the main parts of the kidney. Urine formation takes place in 3 main phases. ठीक है? And keep it in mind, these three main phases, they take place in different parts of the kidney. The first phase of the kidney, of the urine formation, which is known as filtration, pressure filtration. Pressure filtration का मतलब है कि यहाँ पर blood का pressure बहुत ज़्यादा है. ठीक है? The first step is pressure filtration. Pressure filtration का मतलब है कि यहाँ पर blood pressure जो है, it is going to be very, very high. The second step is the reabsorption. Yeah, selective reabsorption, known as selective reabsorption. ठीक है? It is known as selective reabsorption. ठीक है? Selective reabsorption. And then the next and the last one is tubular secretion. यहाँ पर आपके पास जो कुछ भी हो रहा है, the main aim of all this is to remove metabolic wastes. दो functions हैं, remove the metabolic wastes and to save or maintain the water content of the body. So it means that the kidney is carrying on 2 main functions. One is osmoregulation. Okay? One is osmoregulation and one is excretion. These are the main functions of the kidney. The other one is excretion. Okay? And both these functions are controlled by the hypothalamus, which is the part of the forebrain of man. Okay, the hypothalamus is the main control center, or we can say it is the main thermostat of the body, and it controls the main functions of the body. Okay, so इसमें आपने thermostat पढ़ा होगा. Now let us go back to the presentation. Presentation आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ. दोबारा से वीडियो दिखाती हूँ. Okay. ये कर लिया था, ये कर लिया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. यहाँ से करना है. ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की वीडियो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कैसे होता है. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टुडे. ब्लड सप्लाई टू द नेफ्रॉन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. Excretory function of the nephron, we are going to discuss it, then steps of urine formation, and then some practice questions. I have given you people all practice questions after the major topics. ठीक है? तो इसमें and in some presentations मैंने MCQs भी बनाए हुए हैं. So it is better that you people keep the record of these screenshots with you. Okay? Now let me first of all let me show you the structure of the nephron. Give me 1 minute, Vita. It will take a minute or two, not even a minute or two. Let me see. Structure of the nephron आपको मैंने कल दिखाया था और आपको मैं दोबारा एक दफा structure of nephron दिखा देती हूँ. Then working of the kidney जो है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. First of all, structure of the nephron. Nephron. Can you see the screen? Can you see the screen of structure of nephron? Reply करें.
or should I share it again? Can everybody see the screen? Yes or no? Reply करें बेटा, जल्दी reply किया करें. Okay. ठहरे एक मिनट, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ. Let me go to stop share and then let me go to share again. ठीक है. ये कभी कभी वीडियोस में ये मसला हो जाता है कि इसमें आपको जो है ना वो दोबारा शेयर. अब नजर आ रहा होगा. अब नजर आ रहा है. Can you see it now? Hopefully अब नजर आ रहा होगा. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लीजिए. ओके शाबाश. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे नेफ्रॉन को पढ़ते हैं. द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. Nephron is the structural and functional unit of kidneys. It helps in the elimination of waste material from the blood. These are convoluted in the cortex region. Convoluted means coiled. Okay. In the cortical region, I told you people yesterday that the kidney is divided into two regions, the cortical region and the medullary region. Okay. In the cortical region, the color of the cortical region is dark red. Why is it dark red? Because the convoluted and the condensed parts of the nephron are all isolated inside the cortical region. And the loop of Henle is present in the medullary region, so it shows a light color. And straighten out in the medullary region. Each nephron is about 6 centimeters long and has 1. Bowman's capsule. It is a double-walled, cup-shaped structure present in the renal cortex. The wall is made of thin and semi-permeable squamous epithelium. Squamous epithelium जो है वो होती है normal delicate cells which are placed close to each other and they have a high permeability. Squamous epithelium lying close to each other and they have a thin cell membrane and they have a high permeability to water. Called podocytes. In the cavity of the capsules, there is a group of capillaries called the glomerulus. The permeability of glomerular membrane is 100 to 500 times more than the usual capillary. जी, ये बात आप याद रखिए. The glomerular capillaries are very permeable. They allow a lot of water out and in. ठीक है, आगे चलें. Bowman's capsule and glomerulus together form the Malpighian body. Two, nephric tubules. It has a proximal convoluted tubule, PCT. It is present in the cortex and is convoluted. It is 12 to 24 millimeters in length. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आपकी बुक में ये चीज मिस हुई है, इसको नोट कीजिए आप लोग. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. Lined by brush bordered cuboidal epithelium with numerous microvilli. Why do you think these microvilli are present? Anybody can give me the correct answer. Why do you think these numerous villi are present? This brush bordered cuboidal epithelium having microvilli. Why do you think they are present? Can anybody give me an answer? क्या आप समझते हैं ये क्यों प्रेजेंट होगा यहाँ पर? It increases shabash Shalina. Yes, it increases the surface area. Yes, Kashmala. Yes, Muskan. It increases the surface area, shabash, for reabsorption of water back into the circulatory system.
This leads into the loop of Henle. It lies in the medulla region. It is U-shaped and has a thin descending limb and thick ascending limb. This is the distal convoluted tubule, DCT, and is present in the cortex region. It opens into the collecting tubule. Renal blood supply. This is a very important short question. Renal blood supply यदि हम करते भी हैं इसको देख लीजिए. Each kidney is supplied by the renal artery. The arteries are the distributory system of any organ. ठीक है? Arteries are the distributory system. They supply blood. ठीक है? And veins are the collecting system. ठीक है? The renal artery supplies blood to the kidney directly from the abdominal aorta. Inside the kidney, the artery divides into a number of major branches called सिकंदर, आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था क्लास में बेटा कि जो रेनल आर्टरी है वही उसकी ब्लड सप्लाई बनती है और वही ग्लोमेरुलस बनता है, और मैंने आपको क्लास में भी आंसर दिया था और अभी भी आप देख लीजिए, आपको आपका अच्छा सा आंसर मेरा बेटा मिल जाएगा. ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व भी करें और नोट भी करें. Interlobular arteries. As soon as a renal artery enters the kidney, it divides into interlobular arteries. ठीक है? Interlobular arteries. ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था कि ग्लोमेरुलस को जो कैपिलरी सप्लाई कर रही हैं, क्या वही ग्रुप ऑफ कैपिलरीज किडनी को जनरल ब्लड सप्लाई दे रही? यही क्वेश्चन था ना सिकंदर आपका बेटा? तो इसमें देखें ये आपका आंसर है. इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में से देखें ये आर्टरीज निकल आई हैं जो कि आपको जी, अब देखें ना आपके पास जवाब आ रहा है इसमें, जिसमें देखें अब देखें वन ऑफ देम इज थिकर, दिस इज द एफरेंट जो कि सप्लाई कर रहा है, एंड वन ऑफ देम इज थिनर व्हिच इज द इफरेंट. ठीक है, ये दो हैं. Interlobular arteries में से कट आउट हो रही हैं and the part of them they are going into the glomerulus and going to form the मतलब it is forming a part of the functional unit also. Each artery divides into numerous afferent arterioles. An afferent arteriole enters the cavity of Bowman's capsule and forms numerous capillaries called the glomerulus. It is drained by the afferent arteriole. Now look, the pressure in the blood that is created over here, you note in the glomerulus, you can see there is a difference in the diameter of the afferent and the efferent. Okay? The afferent arteriole is of a larger diameter as compared to the efferent arteriole, because of which the amount of blood that pushes into the glomerulus, it comes out with a lesser space. And because of this lesser space, there is a force of blood that is created inside the glomerulus. And because of this force of blood that is created inside the glomerulus, there is a higher blood pressure present in this glomerular region. And because of this higher blood pressure, the liquid it oozes out into the Bowman's capsule. ठीक है, आगे चलते हैं. जी बेटा, आप सही कह रहे हैं. Skandar, this was present in first year of Nephron. Okay. Now, इसमें इन्होंने इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है. ठीक है, let us go to the topic now, and then from there we will come back to the functioning. पहले मैं आप लोगों को functioning से पढ़ा दूं, उसके बाद फिर board use कर लेते हैं थोड़ा सा. Then can you see the screen बेटा? Okay. Now the structure of the nephron वीडियो हमने देख ली, अब हम आगे चलते हैं. Blood
blood supply to the nephron. Now note this down. ये इस दफा बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया था, ज्यादातर बच्चों ने ठीक लिखा था, बहुत सारे बच्चों ने गलत भी लिखा था, क्योंकि इसमें बोर्ड के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे ने ग्लोमेरुलर कैपिलरीज लिखी हैं तो इतने नंबर दे दें, अगर बच्चे ने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज लिखी हैं तो इतने नंबर दे दें, अगर बच्चे ने वेसा रेक्टा लिखा है तो ठीक है, अगर बच्चे ने इंटरलोबुलर वेन्स मिस किए हैं तो इतने नंबर काट लें। तो मतलब ये है कि ये पूरा ये 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। The renal artery into the kidney is, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, it breaks down into the interlobular arteries. The interlobular arteries then they form the afferent arterioles in the cortical region and supply to the glomerular capillaries and the Bowman's capsule. ठीक है, from the Bowman's capsule, these afferent arterioles they move out in the form of efferent arterioles. These efferent arterioles, they are less in diameter as compared to the afferent arterioles, and they arise from the glomerulus and then supply the other parts of the kidney. Okay. When they arise from the glomerulus, they are then known as the peritubular capillaries. The peritubular capillaries are actually a network of capillaries that very important difference. The peritubular capillaries, they surround the proximal and the distal tubules. Okay. Can you hear me loud and clear? They surround the proximal and the distal tubules. Okay. The peritubular capillaries, and then from the peritubular capillaries, the vasa recta arise. Vasa recta is actually a network of capillaries which is present inside the loop of Henle region. Okay. Then the vasa recta, they converge again, they come together, form the interlobular veins, and from the interlobular veins, the renal vein, and from the renal vein out of the kidney in the form of the inferior vena cava. दोबारा देख लीजिए, the renal artery into the interlobular arteries. From the interlobular arteries, it forms the afferent arterioles, which supplies blood to the Bowman's capsule and produces the glomerular capillaries. Then, from the Bowman's capsule and the glomerular capillaries, efferent arterioles arise, and these efferent arterioles, they then form a rough convolution of tubules, a collection of tubules which is called the peritubular capillaries. In which region? MCQ question here. In the region of the proximal and the distal convoluted tubules. Then they form a synchronized network which is called the vasa recta. In which region? In the region of the loop of Henle. Okay. Then they converge together again and they form the interlobular veins. The interlobular veins join again, form the renal vein, and from the renal vein, they fall into the inferior vena cava, and from the inferior vena cava, they go to the hepatic portal system. You might have studied the hepatic portal system. Can anybody tell me what the hepatic portal system is? The hepatic portal system. Can anybody tell me what the hepatic portal system is? Gee, beta, I'm waiting for your answers. Okay. Filtering of blood. These are the main phases of blood formation. Now, this is a long question which you people should expect because is dafa long question nahi aaya isme se. So you people should expect a long question this time. Filtering of blood is the first phase. G. It takes blood to the kidneys from the regions that are placed lower than the kidney. The filter blood, then the waste are passed out as urine and occurs in 3 main processes. The nephron, the function is that they filter blood, then the waste are collected in the form of urine, which passes out of the body. The main steps in urine formation are ultrafiltration, selective reabsorption and tubular secretion. इसकी वीडियो में आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगी, ठीक है। जो फॉर्मेशन ऑफ किडनी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, इसकी पूरी वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके बेटा, तो ये आप लोगों ने जाना नहीं है। अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी होगी तो मैं आपको बताऊंगी, यू विल ज्वाइन द क्लास अगेन, लेकिन हम वीडियो देखेंगे। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, it takes place under a high pressure. A high pressure of what? A high pressure that is created inside the glomerulus. And that high pressure is known as hydrostatic pressure.
And why is this hydrostatic pressure produced? This hydrostatic pressure is produced due to the difference in the diameter of the afferent and the efferent arterioles. Question, short question here. Why is there a high hydrostatic pressure present in the glomerulus? There is a high hydrostatic pressure present in the glomerulus due to the difference in the diameter of the afferent and the efferent arteriole. And due to this high pressure, liquid oozes out of the glomerulus and comes into the Bowman's capsule. Okay? The diameter of the efferent arteriole is half of the afferent arteriole. 20% of blood plasma is filtered into the Bowman's capsule due to the high pressure in the glomerulus. And that filtrate that comes into the glomerulus is called the glomerular filtrate. Now, the glomerular filtrate in the Bowman's capsule, plasma in the blood, interstitial fluid between the tissues, lymph in the lymphatic system are by and large the names of the same thing, the liquid part of blood. Okay, plasma, lymph, glomerular filtrate, interstitial liquid, interstitial fluid, these are all by and large the liquid part of the blood. We get 20% of blood plasma is filtered into the Bowman's capsule due to the high pressure in the glomerulus. And that liquid is said to be the glomerular filtrate. Beta, if you people have any question, you can drop your question anytime. Okay? I do not stop you people from asking questions. You can ask as many questions as you want to. Okay? What the reason is that when you ask questions, we discuss the concept and then the concept becomes very, very strong and clear again. Okay? बेशक आसान सा सवाल हो, do ask questions. Do not hesitate to ask questions. It is similar to blood plasma in composition. Now, the composition of the glomerular filtrate. The glomerular filtrate contains glucose, it contains amino acids, it contains vitamins, it contains ions, it contains nitrogenous base and some hormones and water. And the rate of filtration of this blood plasma, MCQ question here, 125 ml per minute is filtered from each nephron. अब आप देखें ये इतना ज्यादा लिक्विड जो है ये ईच नेफ्रॉन से ये फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है. Composition of the glomerular filtrate, it contains glucose, it contains amino acids, this is also useful, this is also useful, it contains vitamins, very useful, it contains ions, might be useful, ठीक है. It contains hormones, it contains water, very very important component. और एक मिनट में every glomerulus is taking out 125 ml, and we have जो है a large number of जो है nephrons in our body. ठीक है. The total amount of blood in our body is about 4 to 5 liters, and you can see कि अगर इस हिसाब से पानी हमारी बॉडी से जाया होगा तो हम कितना पानी पिएंगे? 125 ml. 500 ml हमारा ब्लैडर भरता है दिन में, तकरीबन कितनी दफा? 4 से 5 दफा, ठीक है. तो ये 125 ml का मतलब है 1 मिनट में, तो इट मीन्स के बस पूरा टाइम जो है वो ब्लैडर ही भरा रहेगा. तो किडनी का एक फंक्शन ये भी है कि इट हैज टू एब्सॉर्ब बैक द एक्स्ट्रा वाटर एंड रिटेन इट इनसाइड द बॉडी अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस हार्मोन्स. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्लाइड. ये स्लाइड आप लोगों की बुक में नहीं है, आप लोगों की ये मैंने बहुत तलाश की और फिर मैंने ये लगाई है यहाँ पर. The afferent arteriole, इसमें गलती क्या है? Can anybody note the mistake in this one? किसी को इसमें गलती नजर आ रही है स्केच में? बताइए. Can you see a गड़बड़ in the sketch? Anybody? किसी को भी नहीं कोई गलती नजर आ रही? बिल्कुल परफेक्ट है. परफेक्ट तो नहीं हो सकता, मैं बताऊं? अच्छा, ये देखें, डायमीटर ऑफ afferent and efferent arteriole की डिफरेंस. afferent arteriole और efferent arteriole बिल्कुल एक जैसा बनाया हुआ है. इसमें यह है कि इसको हाफ होना था इसका,
ठीक है, afferent arteriole, glomerular capillaries. नंबर 1 क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन. नंबर 2 क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन. ठीक है. नंबर 3 क्या हो रहा है, ट्यूबुलर सिक्रीशन. नंबर 4 क्या हो रहा है, कलेक्शन एंड यूरिनेशन. ठीक है, यहाँ पर एफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं. ठीक है, फिर इफरेंट आर्टीरियोल्स हैं, देन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं. उसके बाद वेसा रेक्टा बनता है. वेसा रेक्टा के बाद इंटरल्यूबुलर कैपिलरीज बनती है. इंटरल्यूबुलर कैपिलरीज के बाद हमारे पास बन जाती है रेनल वेन, एंड फ्रॉम द रेनल वेन इट गोज टू द इंफीरियर वेना cava. अब देखिए ये बेसिक स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये देख लीजिए. फिर उसके बाद आप लोगों को मैं वीडियो दिखाती हूँ. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, अब यहाँ पर देखें, ठीक है, द इफरेंट इज लेसर इन डायमीटर एज कंपेयर टू द एफरेंट. द ग्लोमेर, अच्छा, हियर दे हैव कॉल्ड इट द रेनल कॉर्पसूल. एक और नाम भी बताया था वीडियो में, किसी को याद है? किसी को याद है रेनल कॉर्पसूल का या वुमेन्स कैप्सूल का एक और नाम भी वीडियो में बताया था? कैन एनीबडी रिकॉल द नेम? इफ यू रिकॉल द नेम, गिव मी द मैसेज. Glomerular filtration creates a plasma-like filtrate of blood. ठीक है, a filtrate is produced in which the blood cells are minus. ठीक है, number 1. Number 2, in this area, tubular reabsorption in the proximal convoluted region removes the useful solutes from the filtrate and returns them back to the blood. ये देखिए, the useful materials are going back into the blood. Then tubular secretion removes additional waste from the blood and adds them into the filtrate. This is hormone controlled. एल्डोस्टेरोन की प्रेजेंस में ये होता है. किसी ने मुझे नहीं बताया कि इसका दूसरा नाम क्या है. वीडियो आपको दिखाई थी, मैंने कहा था नोट किया करें सारी चीजें. क्यों नहीं किसी को आ रहा कि इसका दूसरा नाम क्या है? वीडियो में बताया था इसका दूसरा नाम क्या है. किसी को भी याद नहीं आ रहा? कल भी देखा था, आज भी देखा था. वीडियो के पॉइंट्स क्यों नहीं नोट करते हैं आप लोग? दिस इज नॉट गुड. दिस इज नोन एज द Malpighian body also. Tubular secretion, it removes additional waste from the blood and adds them to the filtrate. Okay. The water conservation removes water from the urine and returns it to the blood and concentrates the waste. This is hormone controlled. This is hormone controlled. This takes place under pressure. This takes place under pressure. These 3 and 4 are hormone controlled. ठीक है, आगे चलते हैं. Now, अलग-अलग तरीके से आपको मैं बता रही हूँ, किसी तरीके से भी आपको समझ आ जाए. ठीक है, ये देखें, ये कितनी खूबसूरत जो है ये डायग्राम है. इसको आप लोग अपने पास सेव रखिएगा. ठीक है, दिस इज द वुमेन्स कैप्सूल. दिस इज द ग्लोमेरुलस. फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कर्सर के साथ रहे वाटर, यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड, सॉल्ट्स, all of them are filtered into the cavity, woman's cavity. ठीक है, अच्छा जी. From here, what do we see? This is the peritubular capillaries. These peritubular capillaries are surrounding the proximal and the distal convoluted region. This is the vasa recta, which is surrounding the loop of Henle. Glomerular filtration. Water, salts, nutrient molecules, and waste molecules move from the glomerulus to the inside of the glomerular capsule. These small molecules are called the glomerular filtrate. फिर उसके बाद number 2, reabsorption, selective reabsorption, ultra reabsorption, tubular reabsorption, एक ही बात है. Nutrient and salt molecules, number 2, are actively reabsorbed back from the convoluted tubules into the peritubular capillary network, and water flows passively. Water flows passively. अब ये तो मुझे बता दें what is meant by water flows passively. अब ये मत कहना कि नहीं आता, चुप करके फिर बैठे रहेंगे. ठीक है, बताइए जरा, what do we mean by water flows passively? Nutrient and water molecules are actively reabsorbed from the convoluted tubules into the peritubular capillary network, and water flows passively. Active reabsorption, passive. हाँ जी, जल्दी बोलें. Hurry up. Water flows passively. क्या मतलब है water flows passively का?
ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने लैपटॉप की स्क्रीन के साथ बात कर रही हूँ, आगे कोई भी नहीं जवाब देने के लिए। जी, डिफ्यूजन, ओके ओके, ठीक है सिकंदर। एनीबडी एल्स एक्सेप्ट सिकंदर इन द क्लास? एवरीबडी इज स्लीपिंग? I need answers. Give me answers, even if wrong answers हैं. Try to participate in the class and stay active in the class. Due to difference in potential, so water automatically moves. Okay, ठीक है, शाबाश बेटा सिकंदर। यहाँ पर क्या है कि the ions that come into the glomerular filtrate, they actively move back. That means कि ATP use होता है, active transport होता है। And जहाँ तक water की बात है, water जो है वो सादा सादा without any kind of energy, शाबाश हसनैन, it moves by simple osmosis. Very good Husnain. Alina, water moves from the areas where the solutes are less concentrated to the areas where they are more concentrated. Shabash, shabash. Very good Alina, very good answer beta. ठीक है, I need participation from you people beta. Number 3, tubular secretion. Certain molecules, अब ये बहुत ज्यादा आपने ध्यान से सुनना है, hydrogen and penicillin are actively secreted from the tubular capillary network into the convoluted tubules. अब ब्लड में से एक चीज जबरदस्ती इधर आ रही है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे पेनिसिलिन है, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे यूरिया है, जैसे क्रिटिनिन है, ये जो चीजें हैं ना, ये ब्लड में से जबरदस्ती इधर आ रही है। In this region, two hormones are working, aldosterone and antidiuretic hormone. ठीक है, हमारी क्लास का टाइम बेटा कम रह गया है, थोड़ा सा आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको एक वीडियो दिखानी है, वीडियो रह गई तो फिर आज की क्लास का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इस रिकॉर्डिंग को, पता नहीं रिकॉर्डिंग कहाँ चली गई है, ये रिकॉर्डिंग को मैं अपने पास सेव करती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना हम जो है ना वीडियो की तरफ आते हैं। ठीक है, ओके, ज्वाइन द क्लास अगेन बेटा, कम अप।